स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स में। आज का एपिसोड नंबर है 58। टॉपिक है स्टेट। पावर एंड पॉलिटिक्स का चैप्टर हम कर रहे हैं, पेपर 1 सोशियोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया है सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ पावर, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, द रेस्पेक्टिव रोल्स, द रेस्पेक्टिव टाइप्स, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था पॉलिटिकल पार्टीज। आज देखते हैं स्टेट का क्या अंडरस्टैंडिंग है। स्टेट होता क्या है? हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। रूसो बोलते हैं कि कैसे एक टाइम था जब सॉलिटरी लिविंग हुआ करती थी और कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग ग्रुप में रहना स्टार्ट कर देते हैं, कम्युनिटी में रहना एक स्टार्ट कर देते हैं। जब से लोग कम्युनिटी में रहने लगे तो कुछ दिक्कतें आने लगी। There were certain issues which were faced by the people. The people who had stronger physical power, they started dominating and they exploited the people who did not have that optimum power to resist. इन सब चीजों को देखते लोगों को ये लगने लगा कि शायद एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो हर किसी को उस सोसाइटी, उस ग्रुप या उस कम्युनिटी के अंदर प्रोटेक्ट करके रख सके। और वहां से हम देखते हैं कि स्टेट का एक एम्पेरिकल बेसिस पे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। बट अगर हम ओरिजिन देखें स्टेट की, तो द वर्ड द स्टेट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैकियावेली, जहां पे बहुत सारी डिफरेंट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग्स दी गई है स्टेट्स की। कुछ लोग बोलते हैं द स्टेट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिवाइन क्रिएशन, इट वाज द गॉड हिमसेल्फ हु क्रिएटेड द स्टेट। There are certain force theories of state which advocates that state is the result of force, where certain people largely created an organizations in order to ensure the rule over the people. But however, अगर ये दोनों थियरी हम देखें, they do not have any empirical substance to substantiate its position. The first more acceptable theory of state's origin was given by Hobbes, Locke and Rousseau. All of them gave largely the social contract theory. तीनों की अंडरस्टैंडिंग एक चीज कॉमन पे है कि लोगों ने स्टेट बनाया, where the people came together, surrendered certain right to an organizations in order to ensure protection over the rights of all. They largely surrendered some rights through a contract where they were obliged that these things would not be practiced, and these organization to which those rights were surrendered over a period of time came to be known as states. And the state ensured the protection of all the people, so that the people who are having certain exceptional capability to dominate, they do not dominate in the society. They do have certain differences in them on the basis of their understanding, on the basis of why people created state. Hobbes advocate that the people created the state because of fear, and social contract theory रूसो की जब सबसे matured होती है, वो बोलती है कि कैसे the people created the state by largely surrendering certain rights in order to ensure equality. All of them, they advocate that since state was the result of the contract created by the people had the right to abolish the contract, that means to change the state. अगर ऊपर देखें तो डिवाइन थियरी के कारण ये माना गया कि जब भगवान ने ही स्टेट बनाया तो लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उसे चेंज करने की, as they cannot violate the divine orders. But since here the people created the state, they had the capacities to largely change the state. And it is from here we actually get a more authentic explanation of the phenomena or the term called as state. A small announcement that at StudyIQ for the first time we are launching a hybrid program, mains content enrichment program, which is specifically meant for the people who are having sociology as their optional, but it is equally useful for the people who are largely preparing for their mains. This program and its schedule is detailedly given at our website and the application as well, where you can get the schedule of the classes, the test series schedule as well. यहाँ पे एसेंस में हम कवर करने वाले हैं द करंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स, नॉट ओनली जस्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज पर्सपेक्टिव्स बट कंप्लीटली फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स. मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा टू कवर द ईपीडब्ल्यू, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स इश्यूज, बिकॉज मेंस के अंदर जो एनालिसिस होती है करंट अफेयर की वो इशू बेस्ड होती है.
किस तरीके से एक एक इशू कवर होता है, पूरा टाइमलाइन सितंबर 2022 से लेके जुलाई, इफ पॉसिबल अगस्त 2023 तक कवर करेंगे, ताकि आपका करंट अफेयर वाला क्वेश्चन चाहे जीएस पेपर में आए या सोशियोलॉजी में आए, इट्स कंप्लीटली डन। इनफैक्ट यू कैन शैटर इट अप। डू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ऑफलाइन के अंदर सिर्फ 50 सीट्स आर देयर। इफ यू यूज द फैकल्टी कोड डिव लाइफ, you largely get this course at 7,999, where the original price is 13,499. Coming further to the topic, there are different scholars who have given their perspectives as far as the state is concerned. For example, Hegel advocated that how the society evolves over a period of time, and he highlighted three stages of evolution: family, civil society to state. State, according to Hegel, is considered as march of God on earth, as this is the most rational manifestation in the society present. On the other hand, Marxist considers state as an organization of bourgeois who tries to protect the interest of bourgeois. ये मानते हैं कि स्टेट जो होता है वो bourgeois ने बनाया होता है. Bourgeois, that is the owners, by controlling the economic resources, they control the suprastructure as well. State is the part of that suprastructure, and these owners largely put their representative. They largely control the state. But however, किस तरीके से ये कंट्रोल किया जाता है, here the different Marxists have different opinion, where Karl Marx himself advocated that it is the economics which directly, that the bourgeois directly control the state, but on the other hand, the scholars such as Paul Zaz advocate indirect control of bourgeois over the state. कहने का मतलब, the bourgeois, they do not directly become the part of state, rather than they put their representative in the state in order to largely control. ये ऐसा क्यों किया जाता है? पॉलिनसैट्स बोलते हैं कि अगर डायरेक्टली बूर्जुआ स्टेट के अंदर पार्ट बन जाएंगे तो लोगों को उनकी असलियत पता चल जाएगी. दे विल अंडरस्टैंड दैट द स्टेट इज गोइंग टू टेक द एक्शंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट. इनडायरेक्टली जब अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठाए जाते हैं तो एक फॉल्स नरेशन, एक फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर लोगों की मेंटालिटी में मेंटेन की जा सकती है, दैट सी वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेट, rather than the state is ruled by some political representatives, but indirectly that political representative would be the representation of this. Therefore, to Marx, state should be abolished, and Marx advocated that how in communist society, not only the society would be free from religion, family and others, but the state would also not exist once the communism is established. Postmodern scholars also have certain issues with the state. Scholars such as Habermas, who actually belongs to a conflict school but does have certain postmodernist tendencies, Habermas advocates कि दो sphere होते हैं individual के, private sphere and public sphere. The state is good till the time it restricts itself to the public sphere. Any action of an individual which takes place outside the home, वो public sphere. Any action of an individual which takes place within the home, that is in the private sphere. Habermas बोलते हैं that in the modern times we do see that the state have started entering into the private spheres and influencing the private sphere, which is not good and right as per Habermas. And the role of state is to only protect, only function in the public sphere. तो हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें भी जब स्टेट कंट्रोल करने लगता है तो हेबरमास बोलता है that is something not right. In the contemporary time we do see there are various applications of this phenomena present as far as the aspects such as egg ban, beef ban, book ban, etc. Further, romantic view of state is given by the economist or welfare economists such as Amartya Sen, who advocate that the modern welfare state is good as it largely ensures social justice in society. Elite view advocates that the masses, the elite theories do not have any confidence or any faith as far as the masses are concerned. They opine that it is the elite who is having the capacity to rule, capacity, and if the rule is given to the elite's hand, if the power is given to the elite, then these people would largely rule the society for the benefits of all. So elite opines that the masses lacks the capacity to understand the nuances of the various political and government aspects. Therefore, the state should always be manned by the elite as they have the right aspects. Example, इलीट बोलते हैं कि स्टेट को रूल करने के लिए ना ही इलीट होनी चाहिए बट इलीट स्टेट को अकाउंटेबल भी करते हैं as they are having capacities. एक day to day common person is more busy in their necessity, the things which are necessary for their sustenance. On the other hand, the elite people largely have ample amount of time, skills and aspects and understands the process. Therefore, they can largely ensure that the state is accountable.
On the other hand, the pluralist view of state largely advocates that how the state is not the only sovereign aspect. Absolute sovereignty of state was spoken by Austin. ऑस्टिन बोलते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होता है, दे कैन टेक द एक्शंस एज पर देयर डिसीजंस, एज पर देयर चॉइस. But on the other hand, pluralistic view advocates that the power is well dispersed in the society, well distributed in the societies. Therefore, the state does not have absolute sovereignty. Every other sphere or the organizations present in the society carries adequate amount of power, which cannot be taken by state as such. तो हर किसी के पास पावर होता है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट कुछ भी कर सकता है और सिर्फ स्टेट के पास पावर है. These are the various opinions. अब the point is this. Many times we do not study such a theoretical aspects. In fact, लोग ये origin of theories भी नहीं पढ़ते हैं स्टेट की. Forget about the depth of the various theories. और सोशियोलॉजी में इसीलिए देखोगे आप, अभी रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों को पेपर 1 में ही मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं जहां पे इतना अच्छा कंटेंट है. अब ये डेप्थ आनी चाहिए आपके कंटेंट के पास, जहां पे एटलीस्ट हर क्वेश्चन में आपके पास 2 स्कॉलर है जो आप लिख सको, so that you can show that sociological tendencies in your answers as such. But इनको यूज करना more important है, as many times the questions can largely come from the second any one single scholar. Weber also gave an important aspect of state where he highlighted the various characteristics of state. टेरिटरी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और पॉपुलेशन होनी चाहिए. तो मैक्स वेबर ने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए फॉर एनीथिंग और फॉर एनी स्टेट टू एग्जिस्ट, कि कुछ स्पेसिफिक टेरिटरी होनी चाहिए जहां पे वो हो, सॉवरेनिटी होनी चाहिए where the state is free from any external pressures, government should be there, and at the same time there should be certain populations upon which it carries the authority. अब ये कहां पे यूज आएगा? आप लोग नॉर्मली, आई होप ये नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप एक स्कॉलर पढ़ लेते हो, आपने सिर्फ स्कॉलर पढ़ लिया, आपने कभी हेबरमास को यूज नहीं करोगे जब बीफ बैन के ऊपर क्वेश्चन आएगा. क्यों? आप नॉर्मली ये तभी यूज करते हो जब पूछा गया है. वेलफेयर स्टेट या फ्रीबीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप इन्हें यूज नहीं करने वाले हो. या फॉर दैट मैटर पावर ऑफ स्टेट के ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो सिविल सोसाइटी के लिए आप ऑस्टिन या फिर उसके रिजेक्शन को यूज नहीं करते हो. या फॉर दैट मैटर इलीट व्यू पे क्वेश्चन आएगा कि कैसे कुछ हद तक इलीट रूल अच्छा भी होता है सोसाइटी के अंदर. जैसे ही वर्ड इलीट आता है हम कॉन्ट्राडिक्टरी या क्रिटिकली लिखने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि और भी कुछ नुआंसेस है जो यूज किए जा सकते हैं. और अगर हम देखें, यह वेबर की थियरी एक सिंपल से तरीके से समझाता हूं कैसे यूज करनी है. अगर क्वेश्चन पूछा जाए द पावर ऑफ द स्टेट हैज कम डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस. इन सब में पावर डिस्कस किया जा सकता है. क्या टेरिटरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है? क्या सॉवरेनिटी स्टेट की इंपैक्ट हो रही है? आज कैसे WTO, IMF और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं. इनफैक्ट EPW जो हमारा कोर्स है जिसमें कवर करूंगा, एक आर्टिकल आया था रिसेंटली कि किस तरीके से एक किताब की रिव्यू आई थी. इनफैक्ट नॉर्मली हम किताब की रिव्यू पढ़ते ही नहीं है, थोड़ी ना कोई टॉपिक है, कितना कंटेंट मिलता है वहां से. गाइस, स्टार्ट स्टडीइंग इट, इफ नॉट विथ मी एटलीस्ट डू इट बाय योरसेल्फ. किस तरीके से हम देखते हैं, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि कैसे जो WHO या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, जो मॉडर्न वैक्सीन जो है कंट्री के वैक्सीन प्रोग्राम्स में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती है, इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस और सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट. और कैसे वो फायदा सिर्फ उन सिविल सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशंस को हो रहा है, लोकली नहीं हो पाता और स्टेट के रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस. किस तरीके से गवर्नमेंट के पावर इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? क्या गवर्नमेंट आज कैपेबिलिटी रखती है टू टेक अ डिसीजन? टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेक एन एग्जांपल ऑफ टेररिज्म, जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट जो चाहे वैसा नहीं कर सकते हैं. परमाणु एक पिक्चर आई हुई थी जहां पे हम देखते हैं कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने छुप के न्यूक्लियर टेस्ट करना पड़ा ताकि हम टेस्ट कंडक्ट कर सकें, हम एक न्यूक्लियराइज नेशन बन सके. अमेरिकन सैटेलाइट से बचते बचाते हमने वो टेस्ट किया. क्यों? गवर्नमेंट थी तो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होनी चाहिए थी. ऑस्टिन, ग्रैमनेल ऑस्टिन तो रॉन्ग बोल रहे हैं, फिर चेंज हुआ है ये. और किस तरीके से आज पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करने का जो एस्पेक्ट है वो भी कम हो गया है सरकारों का, बिकॉज आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर जॉर्ज रिट्जर बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अप द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल और सर्विसेज बियॉन्ड देयर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स. तो लोग आज कैपेसिटी रखते हैं कि दूसरे देश में जा सकते हैं, वहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन सर्कमस्टेंसेस में जो सरकार का कंट्रोल होता है लोगों पे वो कम हो गया है और चारों को रिवर्स भी प्रूव किया जा सकता है. तो कैसे सिर्फ एक स्कॉलर ने आपको पूरे आंसर का स्ट्रक्चर दे दिया? दिस
is the ultimate thing you should be knowing your sociology, because ये अपने आप में thinkers कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें, आपको इनको यूज करना आना चाहिए. And this is where study IQ sociology completely stand different, and I can say with proud that yes, we teach you the application, we just don't teach you the sociological aspects. अब दिस इज द वे, अगर आपको स्टेट पढ़ना है, इसकी और भी डेप्थ है, बहुत सारी डिबेट है. मैंने जनरल स्कॉलर्स इसलिए इधर लिखे ताकि आपके पास कंटेंट रहे और उसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी पता रहे. दीज आर द टू बैचेस विच वी हैव. दिस बैच इज ओनली मेंट फॉर दोज पीपल, चाहे जहां से भी सोशियोलॉजी की क्लासेस की हो, कम टू दिस बैच एंड यू विल फील द डिफरेंस. एंड इफ यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, दिवाकर बोत्रा हिमसेल्फ विल गिव यू द एंटायर फीस रिफंड if not study IQ. And this is the batch which is meant for those people who largely are starting their sociology. Start at the right point, because socialization बचपन में जो होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको इम्पैक्ट करता है. तो एक बार रॉन्ग तरीके से सोशियोलॉजी स्टार्ट कर ली, उससे निकलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. द बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 5th May. द 4th May इज द ओरिएंटेशन सेशन. ओनली 50 सीट्स आर देयर, विच आई एम प्रीटी मच श्योर अभी तक शायद फिल भी हो गई होगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. डू चेक दैट आउट. और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जहां पे रिकॉर्डेड सेशंस, ईपीडब्ल्यूज, पीपीटीज और उनके सारे आर्टिकल्स मैं सॉफ्ट कॉपी खुद बकायदा प्रोवाइड करूंगा. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेंटरशिप मिलती है आपको, जहां पे आपको राइट डायरेक्शन मिलता है. क्योंकि एक डायरेक्शन मिल जाता है तो आप सब में मेरे से ज्यादा कैपेसिटीज है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशंस. हैव अ रियल नाइस डे. थैंक यू. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.